Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Let's have one meeting. I can hear two people talking in the backside, and if they want microphone, I can give it to them. If not, then let's have one meeting. That one meeting is right here. The question is very open-ended. क्या पाकिस्तान में jobs का scope है? It doesn't tell me enough. I've taken the opportunity to answer this question because I think what we all understand from this question is rather a different understanding. Actual question जो है वो आपके ज़हनों में ये आ रहा है कि आज तो हम यहाँ से ग्रेजुएट हो जाएंगे, कल हो जाएंगे, परसों हो जाएंगे, हमारे लिए क्या स्कोप है? I'm not thinking कि आप वरिड हैं कि कोई सिटी में किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, वो जॉब उसको मिलेगी या नहीं मिलेगी. First concern to you is whether this institution that you're graduating from, do you have hope, and where is that hope? Am I thinking right or not? Is this your concern? Please raise hand if this is not. If this is your concern, raise hand. And all those who didn't raise hand, what is your view? Can somebody tell me that? He did not raise his hand. Do you have? आप बताएं मुझे. आपको क्यों नहीं लगती कि वो क्यों नहीं? Because the market is very concentrated, and actually the situation is here. Everyone is doing MBA. There are a lot of MBAs coming up, but the job economy is not going as it should do. भैया आपका नाम क्या है? My name is Umar Javed. Umar, I'm Ali Hassan. And let me make it very clear. although आपने हाथ खड़ा करने की जहमत नहीं की है, मगर क्वेश्चन आपके जहन में भी वही है. Because you just said कि मार्केट में अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स नहीं है, तो ये जो इतने MBAs हो रहे हैं, कि इतने जो लोग पढ़ रहे हैं इस इदारे से, उनका बनेगा क्या? So you agree with me on the question, right? So you should have raised your hand. Okay? And I can bet there are many other people who didn't raise hand because they didn't understand the question, or possibly they are still not concentrated in this session. So I would like your attention. Please come back to this session. अगर आप अपने ज़हन में कोई टीवी ड्रामा देख रहे हैं, इंटरनेट पे कोई और चीज़ देख रहे हैं, तो let's stop that. I need your attention. We all need your attention because this is the time for you. I have spent my time. And I'm sure everybody is spending the time for only you. And if you are important for us, then you should be important for yourself. The answer to this question is, Pakistan के अंदर there are learning disabilities. I don't want to hear it on your hands. Keep them in your pockets. There are learning disabilities, and these learning disabilities start from when you go to grade 1. When you go to grade 1, what happens? आपको आपके पेरेंट्स पूछते हैं, आप फर्स्ट आ रहे हैं कि नहीं बच्चे, आप सेकंड आ रहे हैं कि नहीं, और पहले ग्रेड से लेकर आपकी जो 16th ईयर तक एजुकेशन है, उसमें यही बहस पड़ी रहती है कि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहे हैं कि नहीं आ रहे. I think I'm saying it right because I experienced it. अगर आपको आपके पेरेंट्स ने रेज हैंड, जिसके पेरेंट्स ने एक दफा नहीं कहा कि आप फर्स्ट आना है, आपके पेरेंट्स ने नहीं कहा कि आपको फर्स्ट आना है कभी. Lucky you. Who else is lucky? I see four. Sir, I'm sorry to cut that, but I'm sorry, no disrespect, sir, but I think there's a difference between your family background. It's my family hasn't it's not like my family hasn't motivated me to come first, but my parents have motivated me to learn something when coming back from school. I think learning, gaining knowledge over here is the more important factor, element, because that's what's going to help us in the corporate world, and not coming first or not coming, graduating with a 4C. Thank you. There are few lucky people जिनके families ने ये pressure नहीं उनको दिया. मसला ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोग फर्स्ट आते हैं या सेकंड आते हैं या पेरेंट्स कहते हैं या नहीं कहते. पॉइंट टोटली डिफरेंट है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ. You guys are brought up in a competitive environment. I have spent last 20 years in North America. मैं 2 साल पहले पाकिस्तान में वापस आया हूँ.
and I'm working here. I'm doing a number of things that I can talk to you about. The point I'm trying to make is कि जब competitiveness शुरू से आपके DNA में घुस जाएगी, तो आप coexistence, harmony में work करने को आपके लिए बहुत दुश्वारी होगी. Each one of you is a star, but if I ask 5 of you to work together, you will have complaints about each other. Right, sir, on that. So, sorry. I'm basically, I'll take 2 minutes and I'll answer Sure. this. Then I'll. So bottom line is, there are skills that you're going to need when you go out in the market. When you go for the interviews, you're going to have to display skills of working with other people. So that's number one. People who are able to exercise this skill, their chances of getting job is much better. Number of jobs available in market are not that great currently in Pakistan, I admit. But the future landscape is quite promising. उसकी वजह ये है कि पूरे नॉर्थ अमेरिका में, पूरे यूरोप में पॉपुलेशन उनकी डिक्रीज हो रही है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इंक्रीज हो रही हैं दुनिया में, सिस्टम्स की नंबर ऑफ सिस्टम्स आर बीइंग इंक्रीज्ड एवरी डे, नंबर ऑफ business activities are being increased every day. So there is a tremendous potential in the coming years within Pakistan, outside of Pakistan, in the periphery of Pakistan. So one should not just close your mind that, my God, there aren't many job opportunities. Job opportunities पे सिर्फ एक hint दूंगा. Most of you will look at the newspaper and say कि भाई इसमें से मैंने 10 जॉब देखी, अप्लाई कर दिया, नहीं मिली, खुदा हाफिज. This is absolutely the wrong way to look at it. न्यूज़पेपर में जितनी जॉब्स फ्लोट होती हैं पूरे पाकिस्तान में, न्यूज़पेपर में सिर्फ 10% के करीब जॉब्स जो हैं वो न्यूज़पेपर में आती हैं. सो इफ यू आर ट्राइंग टू बी सक्सेसफुल जस्ट बेस्ड ऑन दैट, यू आर ऑलरेडी डिजाइंड टू गो इन द रॉन्ग डायरेक्शन. नेटवर्किंग से रफली 40% जॉब्स जो हैं वो लोगों को मिलती हैं. आप लोगों को नेटवर्किंग के लिए बहुत ज़्यादा सीखनी है रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्किल्स, कि आप नेटवर्क बिल्ड करें इंडस्ट्री में लोगों के साथ. उनको कहेंगे जी मैं ग्रेजुएट हो रहा हूँ फलां टाइम पे, विल यू गिव मी अपॉर्चुनिटी टू कम फॉर द इंटरव्यू, आई कैन डू दिस दैट एंड व्हाटएवर. हमारा ये हमें एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि हमने जॉब मार्केट क्या है, कहाँ है, ये जानवर कितना बड़ा है, इसका साइज क्या है. हेड हंटर्स के थ्रू 15% जॉब्स जो हैं वो मिलती हैं, नोबडी नोज एंड पीपल डोंट बॉदर टू एड्रेस दोस थिंग्स. वेब पोर्टल्स के थ्रू 20% ऑफ द जॉब्स जो हैं वो लोगों को मिलती हैं थ्रू वेरियस डिफरेंट मीन्स, whether you apply within Pakistan or abroad. ये statistics, ये figures, ये जो वो राज की बातें हैं, ये किसी को नहीं पता. हम कहते हैं जी total jobs का आप 10% न्यूज़पेपर में देखते हैं, उसको देख के डिस्करेज हो जाते हैं, फिर कहते हैं जी jobs नहीं. Sure, I'll take a stab at that. I think जो अली ने इसको थोड़ा सा आप लोग explain किया in terms of थोड़ा सा competitiveness किया, वहाँ पर भी समझ में आती. Instead of me telling you what are the areas in which you want to be competitive, I think let's just focus on me as an employer as to what do I really focus on when I'm looking at a fresh college graduate or any resource for that matter. One thing that Ali had mentioned, and it's really important, although academic skills are very important, for example, if somebody is graduating from IBA, really, the interviewer, me, the prospective employer, we do have a certain perspective in mind that the person should be well-rounded, the person should have a basic perspective of how things are happening in the world today, which is something that I find missing sometimes. I'm not saying that you read up on industry papers and you come well-versed in artificial intelligence and you talk about that as a servant for 45 minutes with me. I'm not saying that. What I'm saying that is you must know what's happening in the world, not just in terms of technology, but what are the business implications of technology. I would demand that in a person who's coming in, because naturally the key क्या कहते हैं उसको bubble breaker for many students, including myself and probably others here as well, is when we move from our school life to practical life. The first bubble that gets burst is that everything is being developed for a business need. It's not developed because it's cool. It's not developed because it looks good. It's not developed because you have to secure a certain number of marks and pass through the exam. It's basically developed to accomplish a business goal. Now, in order to achieve that, what I look for is really teamwork. You must be able to work together, and that is indeed a big problem here. What we have is
Call it lack of maturity, call it a perspective. We all come in with our own perspectives and we're not perhaps not ready to, disisolate ourselves and then open up and start to work together. The problem is कि आप अगर अकेले काम कर रहे हैं और एक असाइनमेंट को अचीव कर रहे हैं, बेशक आप स्कूल के फाइनल ईयर के असाइनमेंट को जो 5-6 लड़के लड़के मिलके करते हैं, वो शायद फिर भी अकॉम्प्लिश हो जाए उसमें आमतौर पे. But I personally noticed by being involved in IBA or in other schools as well, उसमें 2 या 3 डॉक्यूमेंटेशन पे लग जाते हैं, 3 अपना बाकी 2 या 3 जो है वो रियल वर्क कर रहे होते हैं, और वो एक अनस्पोकन रूल उसमें होता है कि जी आप मेरी तरफ को क्रॉस न करें, मैं आपको क्रॉस नहीं करूंगा. The same perspective we bring into our work as well, and that's where you can accomplish a business goal that way. So teamwork is very important. Strong communication skills is very important. If you have strong communication skills, la muhala आपको teamwork orientation होगी आपके अंदर. Technical understanding is obviously a basic prerequisite for us to engage in that conversation. And the last thing, certainly not the least, where I look for, and you all have to look for within yourself before you get out into the market. By the way, let's not even talk about the job market. वो बात अलग है, उसमें कुछ शोबों में हम आज भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, कर सकते हैं, डिमांड भी है, कुछ शोबों में नहीं है, मगर पूरी दुनिया की यही हालत है. So we'll talk about that later at different subsequent stages. अली भी बात कर सकते हैं, दूसरे मेहमान भी कर लें. So the last thing, certainly not the least, is the drive. There has to be a drive to grow, to develop something, to achieve something. Drive then assembles knowledge. It then assembles follow through, which is very important. It then assembles workers' responsibility and accountability. And there by definition आप एक well-rounded individual बनते हैं. इसमें कतई कोई prerequisite कहीं पर भी ये नहीं है कि आप चूंकि कॉलेज से ग्रेजुएट हो रहे हैं तो ये चीजें आपके अंदर होनी नहीं चाहिए, तो काम करने के बाद आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता. अब शायद जब हम लोग ग्रेजुएट हो तो ये शायद चल भी जाए. Now we're very competitive and we'll continue to get more competitive. I think it's not just Pakistan, it's a global effect. If the population in North America is decreasing and the product and services somebody will have to be there to carry on product and services. It'll be the emerging market. It'll be us. We'll have to take it to the rest of the world because we have manpower. So that's the competitiveness that I look for. One thing that you mentioned, Ali Saab also mentioned, and student also said the same thing. The main thing comes down to learning. This question is more actually for the students. Given that what Kashif Sir said, advancing technology is growing at a rapid rate. I think 2 weeks ago, Time magazine में भी था that humanity is going to be immortal by 2045 because of the rate we're changing technology at. As technology students, do you think your institutions are teaching you enough to be ready for the industry? Because the industry, please correct me if I'm wrong, but do you think the students are ready to face the real world? I mean, you can run do while loops, you can run for loops and case scenarios, and we have an answer. I'm Shahzid. First of all, I would like to ask a question. Everybody is saying that we should be focusing on learning. Learning is a very important factor होता है, and because of that, we'll be able to get a decent job in the market. How can we learn something? क्योंकि हमारी more than 90% जो लाइफ यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर स्पेंड होती है, वो इस बात पे डिस्कशन करते हुए स्पेंड होती है कि यार तुम्हारी कितनी जीपीए है, तुम्हारी कितनी जीपीए है, तुम्हारे कितने मार्क्स है, मेरे कितने मार्क्स हैं. वेयर इज दैट लर्निंग पार्ट? क्योंकि एक कोर्स को निकालना, एक एग्जामिनेशन को पास करना, इट्स नॉट द प्रूफ कि यू हैव लर्न समथिंग वेरी स्पेसिफिक और लर्न समथिंग फॉर द इंडस्ट्री. सेकेंडली, यू टोल्ड अबाउट के किस तरह हमको टेक्नोलॉजी को एज अ टेक्नोलॉजी स्टूडेंट कैसे परसीव करते हैं. ठीक है, I'm not positive about that. My thoughts are completely negative about the as a technology institution. यहाँ पे वो mindset, वो culture, वो enthusiasm जो एक technology student के अंदर होनी चाहिए. It's not about running a do and for or a while loop. It's about the mindset. किस तरह आप सोचते हैं कि technology के through हम problems को solve कर सकते हैं, उनको approach कर सकते हैं. Market के अंदर इतनी बड़ी problems इस वक्त exist करती हैं. Why not start solving those problems from the very beginning of your academic life? क्यों आप अपनी ये सोचते हैं कि academic life से निकल कर मैं उन problems को solve करना start करूँगा जब मुझे कहीं पर job मिलेगी? ऐसा mindset हमारा क्यों develop किया जाता है? क्यों हमारे 17 years of education school और college के ऊपर spend करवा के उनको ज़ाया कर दिया जाता है सिर्फ ये बताकर
कि देखो बेटा तुम्हें इस कॉपी में से इतना याद करना है, इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा. How do we change that learning process? Before I deflect to the industry over there, does anyone of the other students want to venture an answer? Or do you all agree with the same question? Do you all have the same question? How do we learn? You are currently IBA students in university life and asking the question, how do we learn? Sir, I'm going to have to deflect this to one of you, please. अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ अल करीम. बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के सवालात सुन के, और स्पेशली जो तालियां बज रही हैं, दैट रिमाइंड्स मी ऑफ माय अर्ली इयर्स ऑफ यूनिवर्सिटी लाइफ. तो आई एम अ 96 ऑब्सोल्यूट ग्रेजुएट, आप लोग मुझसे ज़्यादा मॉडर्न हैं. रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव, देखिए एक चीज़ होती है कि हमारे अंदर एक शऊर आता है, राइट? वी हैव एन अवेयरनेस. द अवेयरनेस does not have a limitation with respect to our age. Okay, so कभी भी किसी को realization इस बात से हो सकता है कि I know I cannot touch the stove because it could be hot. I mean, it's not looking sort of harmful to me. It's not looking dangerous, but based on an earlier awareness where a stimuli was generated, कि गलती से बचपन में हाथ लगाया तो उससे सबक सीखने को मिल गया. Now when we know what the problem is, unfortunately our problem is that we always look that कोई और मसीहा आएगा और हमारा problem solve करेगा. So this is a national dilemma. We all want a lot of things to change in this country, but we think we'll not bring that change. Somebody else will come and bring the change. And then every time we'll have similar questions popping up, and there'll never be a solution to it. So coming to why don't we solve problems early at the age, who stops us? And to be very realistic, believe me, we all have solved problems at very early age. For example, एक 8 साल का बच्चा है, ईद के दिन उसको ईदी मिली है, उसको मालूम है कि मैंने जो है वो टॉय गन लेनी है जो 250 रुपए की है. So he's using whatever sense he has in financial management, in marketing, in selling. कैसे? उसको 50 रुपए ईदी मिली, वो कहते हैं बस सिर्फ 50 रुपए, उन्होंने तो 100 रुपए दिए थे. See, he's using his skills. Why? At the back of the mind, उसका एक टारगेट है. वो टारगेट क्या है? मैंने 250 रुपए आज कंप्लीट करने हैं. क्यों करने हैं? मैंने वो गन देखी, वो मैंने जाके खरीदनी है. So we are all solving such problems at a very early age. दोस्त की शादी है, किसी की भी शादी है, right? We go out for shopping, we go out buy laptops, cell phones, camcorders. What do? Don't we involve in decision making? Organizational behavior MBA वाले students जो उन्होंने पढ़ा होगा rational model of decision making. ठीक है, वो रैशनल मॉडल क्या है? वो तो अर्ली इन द लाइफ जाके आज आपने पढ़ा या मैंने पढ़ा when we were doing MBAs, but actually we were following this model since our childhood. So it's not like we were never exposed. Nature has exposed us to so many things where we resolve it and then we learn. However, coming to the technology part, I think हम बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्सपेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स से, स्पेशली व्हेन वी वर आल्सो स्टूडेंट्स. तो ओवर एक्सपेक्टेशन चाहे पेरेंट्स हो, फैकल्टी हो, इंस्टीट्यूशंस हो, सबका होता है. बट दे आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन वी आर स्टूडेंट्स we'll learn 10% of the time and we'll enjoy 90% of the time. ठीक है, इस फैक्ट को तब्दील नहीं किया जा सकता. एंजॉयमेंट फिर भी होगी, हल्ला गुल्ला भी होगा, सेल फोन्स फिर भी बजेंगे, चैट भी चलेगा, everything would be done, right? But we'll still be learning. That's good. That's good, right? People here, they've made it. तो I think ये इससे अच्छा अचीवमेंट हो नहीं सकता. टेक्नोलॉजी में रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडस्ट्री की आती है, रीचिंग आउट टू एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, टेलिंग देम व्हाट एग्जिस्ट्स. ETLives ने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के साथ काम किया है. वी रीच आउट, वी टेल देम. फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जावा है. हम इंस्टीट्यूशंस में जाके हम ये ब्रीफ करते हैं कि भाई व्हाट आर द लेटेस्ट कोडिंग टेक्नोलॉजीज रिलेटेड टू दिस स्क्रिप्ट. ठीक है, आप कोड, डी कोड, टेस्टिंग, GUI किस तरह से कर सकते हैं.
we tell them. Why? Because we know that the faculty who is there, उसने शायद जो है वो 8 साल पहले प्रोग्रामिंग की होगी या कोडिंग की होगी. World has changed. So it's our responsibility, the industry's responsibility to support the academia. On the other hand, it's the institutional leadership which also needs to reach out to the industry and seek that support. तो जब तक ये two-way support system या partnership develop नहीं होगी, आपके challenges यही होंगे, how do we come up with the industry expectation vis-a-vis technology advancements. Thank you.